ओके सो वी स्टार्ट नाउ। सो आज हमें देखना है एक बिल्डिंग का डिजाइन। ओके सो जो थियोरेटिकल है और जो मेन क्लोजेज हैं IS 800 कोड के, that we have discussed in our last some lectures. So today we are going to design our RCC building, sorry, steel building. So okay, we start. So first of all, I taking a by default building by click on structure wizard and select unit, take it into meters, click on OK and take any frame model in which we are taking frame as bay frame. Now I increase some height like 24, sorry, 24, okay. And 8 segments, I converted into 15. In 5, you can change this bay length also by click on that, but take care of that. The total of this bay length should be equal to the total length. Okay, click on apply. So this is your structure though that I have prepared in our structure learn. Click on cross, click on yes, click on okay. Yes, Sandhu, ask. You are not sharing screen. Yes, ask what a question. Like, you are not sharing your screen. Okay. Your screen is not visible. Okay. Sorry. I must this one. Okay. Now is it clear? Yes, sir. Okay. Thank you, Sandhu. Thank you. Thank you very much. Okay. So I think I have to go through this again. So I go for structure wizard. I change the units in this way. Take the frame model and I take the bay frame. As length, I have taken as 15 with 5 number of bays along length. And I take this one as 24 by 8 bays and it is same. So this is our building. Okay, now I want to design it. So click on cross, yes, and then okay. So you can see your grid system of your building. So this is our building that I want to design. Okay. So now we go one by one steps. So first is our geometry that we have completed. Now we go for our properties. Okay. So I take the properties for our beams and for our columns. So I take the section database. I go for Indian and I take the higher section for our columns like ISMB 500 with single section. Okay, if there is any need of double profile, then we take this also. But now there is not any need for double profile, so I take a single section. Click on add, and for the beams, okay, for the beams, I am taking like a ISMB 350. Okay, so now I want to assign these things to our relative structure components. So this is for our beams. So beams are generally stable in parallel to X and in parallel to Z. So first of all, you have to click on geometry and then select the members at that you want to assign. Now click on assign to selected beams, click on assign, click on yes. So your this beam property has been assigned in this way. You can see by the 3D rendering view also. So this is your beam members. Now next one, these are columns. So columns are generally parallel to Y. So assign it by assign to selected beams. Assign yes. So this is your fulfilled structure with all the properties of members. Now the properties also assigned. Now go for the material. If you want to change, because these all the are made with our steel material, you can double click on that and you can change these values for that. So I yes, Ashwin, ask. Sir, like in the materials also, you are
it is asking for yield stress. Okay. And Yes, in design also, and when we go for design after doing the analysis, we'll design it, right? So in design also, there is yes, this FYLD where it will ask for yield yes, stress. yes, Yield stress, yeah. yes. So there also it will ask then what is the use of giving here? Like I didn't understand in both places we have to give. Yeah, you don't have to go for both cases. You have to just give in your design. If you put in your design, that is also fine. There is no need to put in both the times. You because these If properties, the mainly significance is our Young's modulus of plasticity, Poisson's ratio, density, thermal, critical, and shear. For these, we have to assign the proper material. These are the secondary parameters that we can assign in our design parameters also. so, sir, if suppose I provide the yield stress value in like in materials, then should I provide it in design also? No, no, there is no need. You have to just provide at a single time, and I suggest that you will provide in design. Okay. 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 Yes. Okay. So now we go for the next. There are the specifications. Yes. So it's a very most interesting part. So before that, I have shared one video also in our group. So I want to open that first because through that you will very understanding that. Yes, this one. So first complete this side, then we can. So you can see very properly that how the buildings are going to be designed. So I pose it at a specific level. 360 is available only. Yes. So if you see your sections of I sections for columns are going upward direction and the beams are connected with the flanges of your column. Okay. So you have to just memorize it and remember it that you have to always connect your flanges, okay, with the flanges to your beams. And those secondary beams, those are passing through the primary beams, okay. Those you have to connect it with the web with the connection. There are a lot of connections are available according to the web and web connection. Okay. So this thing I want to show you. So that's why I opened this video. So now, if you see in our case, so I just select some of the members like this one. Right click, 3D rendering, then you see it as easily. So you see that this is the condition is suitable that I have seen the video. Okay. According to the video, that is absolutely fine. Is that fine or not? Yes, tell me. Is that okay that I have seen in video or wrong? No, sir, it is not right. It is not right. So what we have to do? We have to change the beta angle of the column. Okay. Uh, So if yes, so that we okay, can connect with the flange of column to the flange of beam, and then secondary beam okay, will connect with the web. okay. Yeah, that's fine. So you have to change the outermost columns orientation. So if you want to see all the members also, then you can see by this way. You have to just control on your shift control command
You have to click on your control command, then you can see easily that how these are connected. Is that okay or not? So you see that because there are main members are also going. Sorry, these are not. I want to show you. Ah, why it is hanging. Yes. One second. Yes, now it is clear. Yeah, this is your frame. So if you now see the 3D rendering of your one face, then you see for this face, it is absolutely fine. Fine or not? Because your Yes, sir. flanges Fine. is connected your beams of the columns. Is it okay for this face of your building? Yes, sir. Yes, sir. Yes? Okay. So now see another faces also. Go to the top view. Now I want to see the right face. Click on right click, go to 3D rendering. Now again check. So you see that there is problem because your beams are connected with your web of the column. So now we have to change the orientation of these columns only. So select it by the control, click on control and select these columns. You can confirm it by the isometric view also. So your columns are selected. And if you see the right sided, left sided column also, the same problem is there. Okay. For the right sided also, the same problem will be there also. So you can change it at here also. One second. Because there will be another problem will also come in our condition. I will see you. So I go for the properties, take any beta angle, give the 90 degree. Create beta angle. I give some degree like 90 degree first. So I want to check for that and for which one it is suitable. If I take these columns and I selected beams, I have assigned it, then this orientation will be changed. Now I want to see you these segment of our building in correct way. So this is your beams and this is your secondary beam. Those are passing. Is it okay now? But for the secondary beams, you can see the problem also again. You can see the Yes, problem sir. is also here. So now what we do? Because I already said there will be again we find the problem. We find the problem. So if you want to go through again, then you can see again. So if you see very clearly, then at the junction point, uh, yes, at the junction point, you can see these flanges of the beam means the beam is connected with the web, but for the these beams, those are passing inside. Means those are our primary beams. Okay, those are going from flanges connected to columns. Means those beams are connected with flanges of our columns. Those are considered as our primary beams, and those are going to be connected with web of our primary beam. Those are considered as secondary beam. So is it clear to everyone now what I have said? Okay, sir. It is clear, but I want to ask you something. Yes. For column orientation, we are considering to resist the moment. We provided the lane to resist the to get the higher moment of inertia Yes. for higher size of column. We are placed on that direction. Yes. Is it true, sir? Yes. Yes. Because
in which direction the moment will create much more. To resist that, we have to take the centroidal axis. You can consider it y axis for the local member of column. You have to put in that direction to your column orientation. Kindly explain Okay, I explain in it. detail. Yes, no problem. Okay. 1 second. We have doubt in this. Okay, no issue, no issue. Because the design of the building is also going like 4 to 5 days, next 4 to 5 days. So no problem in that. This is your one column. This is your second column. Yes, this one. Now the beams are also passing from here. Okay, there is some diagrammatic problem, so no issue. Some main beams. And these are also our some beams. Okay. So now, for example, some other beam are also passing from and in these directions also. Okay. So like this is your one segment of your structure. Now, you already know that your moment of inertia about this axis. This is now I take it as YY. This is now I take it as ZZ. And X direction is our longitudinal direction. So you will know that your IYY is higher than your IZZ. Okay. If the laterally load will be applied to your structure, like wind, or you can say the seismic also. So for that, this orientation is perfect. This orientation, because this give a more resistance with respect to the 90-degree orientation of those. So what is it mean? If now I making the whole plan of your building, like this is your building plan that I have made. 1 second. This type of, okay, I have taken this as 15 meter. Yes, I have taken this as a 12 meter. So if you see that your all over moment of inertia of your building, okay, if it is your YY, it is your ZZ. For all over the structure, your YY is less than with your ZZ. Is it okay for your total structure? Because if the wind load will be applied or earthquake load will be applied in that direction, then your structure is under the design load. Under design load means the buckling charges for the Z loading, Z lateral loading will be high because there is less. This is your YY, this is your ZZ. So for the loading, I give like this is X, this is Y. This is okay, because that will create a very confusion. Okay, so moment of inertia of your all the building in YY direction is less than your ZZ axis of your moment of inertia. Okay, so if you apply the wind load in X direction, means in this direction, then your moment of inertia for X direction is that is your YZZ. That is more. Is it okay or not? Because for X direction wind, the moment of inertia will be act as IZZ, or that is more already with respect to IYY. So it is clear. It is okay for that. Okay, so if you put your sections in this orientation, it means your this axis is going to be consideration, okay, for the X direction load.
Okay, but you know there are a lot of already the IZ is already high, and if you are taking this individual IZ that is low with respect to your IYY of individual member. So for this type of arrangement, you should take this type of members, this type of orientation of the member. It is perfect for this case. There are some other columns also. If anyone not get now, so you can say again. I will explain again it, no problem. Please explain again. Okay. Because it's a very complicated thing. You have to just focus on that. Okay, so I explain that again. ठीक है. So हिंदी में करे तो कोई दिक्कत है ज्यादा? किसी को बताओ कि हिंदी में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन हो जाए, समझ भी आ जाएगा तुम सभी को. हिंदी इज परफेक्ट फॉर मैंने तो आपको हिंदी बोला था नो सर. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. अश्विन, ओके. सो ओके, लाइक अगर हमारा विंड एक्सट्रैक्शन में अप्लाई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि आई वाई वाई हमारा क्या है, लेंस है. अगर किसी भी रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हो, सो आई जेड जेड फॉर द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज मोर फॉर द वाई वाई. मीन्स आई वाई वाई तुम्हारा लेस होगा आई जेड जेड से फॉर द बिल्डिंग प्लान. यहाँ तक क्लियर है? एक बार मेरे को बताते जाओ वन बाय वन. ठीक है सर. ओके, अगर बिल्डिंग का प्लान देखे तो हमारा वाई वाई क्या है, हमारा जेड जेड क्या है, मोर है, ज्यादा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ओरिएंटेशन हम ऐसा रखेंगे, क्योंकि हमारा लेस कौन सा है, वाई वाई. तो हमारा अगर वाई वाई लेस है तो मुझे वाई वाई के अकॉर्डिंग मेरा मेजर एक्सिस वाई वाई को ज्यादा रेजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें फेल होने के चांसेस क्या है, ज्यादा. वाई वाई के अलोंग फेल होने के चांसेस ज्यादा है. मीन्स योर इफ योर विंड विल एक्ट in the direction of Z, then the chances of the failure of your building will be more. That's why you have to make your building as very stiff for the loading in Y direction. Okay, तो हमको Y डायरेक्शन के लिए इसको स्टेबिलिटी ज्यादा देनी है. अब ये कैसे हो सकता है? अगर मैं मेरे पास दो ऑप्शन है, कॉलम को ओरिएंटेशन में कैसे रख सकता हूँ. पहला तो मेरे पास ये है कि पहला चांस है कि मैं ऐसा रख दूँ, और दूसरा है कि मैं इसको 90 डिग्री पे प्रोवाइड करा दूँ. अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला इंक्रीज करना है कैसे भी. इस विंड के लिए मेरे को ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए. इस विंड के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा किस में होगी, जब मैं इसको ऐसा रखूंगा, जब मैं या फिर इसको ऐसा रखूंगा. पहले वाले केस में ज्यादा होगी, क्योंकि इसी के अबाउट क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इस केस में. अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन और व्हाट, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर समझ में नहीं आया तो एक बार बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ. सर आई वाई Yes, sir, वाई you can ज्यादा explain होगा. again. देखो, इंडिविजुअल मेंबर के सेक्शन लिए वाइज. हमारा आई वाई वाई ज्यादा होगा. हाँ. ओके, और हमें यही चाहिए, क्योंकि हमारा इधर तो वीक है. अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आई वाई वाई, तो वीक ही है. है ना. अगर मेरा विंड इधर से अप्लाई होता है तो मेरा जो स्ट्रक्चर है पूरा ओवरऑल वो वीक है हाँ. इसको रेजिस्ट करने के लिए. तो इसके लिए मेरे को हर हाँ. एक मेंबर का स्टिफनेस ऐसे रखना है ताकि उस तरफ मेरे को जो स्टिफनेस है वो ज्यादा मिले टोटल. मीन्स ये कंपनसेट हो जाए. अगर मैं इसको ऐसा रख दूंगा तो ये पहले से डूबा हुआ है नीचे, पहले से कम है. ऐसे रखने से और कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अबाउट तो अभी अभी भी इसके पास क्या है, कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके पास, इस एक्सिस के अबाउट. अगर मैंने ऐसा यहाँ पे रख दिया तो पहले से हाँ. कम है, ये और कम हो जाएगा. हाँ. Okay, so that's why we have to take our orientation in these ways. Now clear? ओके. ओके. Okay. So we move on for our structures now. So ये मुझे ऐसे बाद में समझाना था, लेकिन अभी समझाया तो हम इसको अभी अप्लाई करते हैं इसमें. So this is your plan of building. Okay. So this dimension is large, this dimension is less. So you have to consider as your condition. So what we have to do? We have to take the I sections in this orientation that I have made. This one, left one. Okay. इसमें हमको क्या करना है, हमारा ओरिएंटेशन रखना है आई सेक्शन का. सो इफ यू सी
very clearly, then you can take like columns. So you want to select the columns now by parallel to I. Right click on that 3D render view, you can see. Now go to the top. Okay. So if you see from the top view, if you see from the top view, but which orientation you want, you are saying this type of orientation is available here, but you want this type of orientation, this one, left one orientation you want in the structure, but instead it is opposite or same. Opposite, sir. अपोजिट है तो हमको चेंज करना पड़ेगा. सब में क्या देना 90 डिग्री. सो यू हैव टू जस्ट मेक द प्रॉपर्टी चेंज बीटा विद 90 डिग्री 90 डिग्री एंड क्लिक ऑन ओके. असाइन ऑल द कॉलम्स. इसको सब कॉलम्स पे असाइन करना है. सो गो फॉर द अगेन सेलेक्ट वाई. एक ऑप्शन तो ये सेलेक्ट करने का. दूसरा हमारे पास बाय द प्रॉपर्टी नेम यू ऑल्सो कैन गो. क्लिक ऑन बाय प्रॉपर्टी. सो हमारा कॉलम का प्रॉपर्टी कौन सा था? ISMB 500. तो इस पे भी अगर क्लिक करके देखते हो तो यहाँ से भी तुम्हारे कॉलम्स क्या है सेलेक्ट हो जाएंगे. Now click on selected beams, assign, yes. So it is assigned now. If you want to see, then you can see our strand 3D rendering view. Now it is okay. You can see it is okay now. Okay. All the columns now oriented as per our conditions. It is perfectly fine. So now we go for our specification. So what are the specifications we have to use? So we go for the video again now because there. So these are our secondary beams. Those you are seeing. So हमारे कौन से secondary beams? ये parallelly हमने इसमें कौन से लिए हैं? Angle sections use में लिए. In this case, we have used the angle sections for our secondary beam, and you can see the floor mechanism. हम क्या बनाना चाहते हैं? फ्लोर बनाना चाहते हैं यहाँ पे. तो हमको पूरा कवर चाहिए एरिया. उसके लिए हम क्या ले रहे हैं? एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे एंगल सेक्शन ले रहे हैं ताकि उसके ऊपर हम क्या कर सके? एक स्लैब कास्ट कर सके या फिर कास्टेड स्लैब हम वहां पे रख सके. ओनली स्लैब रखना है बस, इतना सा काम. So it have to play in placed at every position and every place of our building. तो हमें इसके लिए क्या करना है? हमको वही एंगल सेक्शन देने हैं. सो एंगल सेक्शन देने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बीम जोड़ने पड़ेंगे. यहाँ पे हमें क्या जोड़ने पड़ेंगे? बीम. यहाँ से बीम जा रहे हैं, हमको ऐसे बीम क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे. सो बीम ऐड करने के लिए हमको इधर नोड चाहिए. हमको इधर क्या चाहिए? नोड चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द बीम्स. So by the property also you can select to the beams. Now all the beams are selected. Now right click. Okay. Go to the insert node and you can take. So मैं कितना ले रहा हूँ स्पेसिंग? मैं लेके चल लेता हूँ like 1 meter by 1 meter in all the direction. मैं पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. So this is your plan and these are your primary beams. Okay. These are your primary beams. You want to make your secondary beams in that. So these are your secondary beams. First, second. क्योंकि हमारे टोटल कितना था? ये 3 मीटर था. तो 3 मीटर था तो मैं ये 1 मीटर ले लेता हूँ, ये 1 मीटर ले लेता हूँ और ये 1 मीटर ले लेता हूँ. So this is your secondary beam that you can make. Okay. So I want to make this also. Now again, one interesting point. क्योंकि हमारा कितने बाय कितने का है? 15 by 12 मीटर. कितने बाय कितने का है? 15 by 12 मीटर. अब अपने पास दो ऑप्शन है कि मैं या तो ऐसे बिछा सकता हूँ या फिर मैं ऐसे बिछा सकता हूँ. So which case you want? Again, you can increase your stiffness along the which one axis? YY again. So अगर तुम्हें YY के अगेन दोबारा. Yes. along the shorter span. Yes, along the shorter span, but we have the equal span in both the cases, in both the axes. So we have two options for this kind of case. Okay. So along the shorter span, if you want to assign like in this way or in this way. No, sir. Second one. Second one, this one. Huh. Okay. So by this one, can you increase
Can you increase IYY or not? Okay, I clear this. So if I take one 3 by 3 meter segment at here, and we have two options like this one and this one. Okay, so if you take in this direction, first one, those I have colored with this color. Okay, so if you take in this direction to your angles, then what will happen? If you apply the load, then it can buckle in this way. And if you put your angle section in this direction, then it can also buckle in this way. In both the cases, it can buckle in both the ways. Okay, now you want to increase your IYY. So IYY, if you want to increase, then you have to know what is the slenderness ratio will be more. So first one, you are saying this one, okay. And another one who, in this case also. Okay, so I think first one or second one? Because it's a very complicated. If you think, then you will get your answer. ओके सो मैं बताता हूँ ये वाला केस ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बकलिंग के चांसेस क्या होंगे कम क्योंकि यहाँ से आने वाला लोड क्या है ज्यादा है ऑलरेडी बकलिंग के चांसेस क्या बिल्डिंग के ज्यादा है किसके अबाउट आई वाई वाई के अबाउट अगर तुमने इसी के अकॉर्डिंग अगर ये दे दिए मीन्स स्केल हो तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ जाएगा बकलिंग की वजह से जो लोड्स है मीन्स इसकी मोमेंट यू हैव टू मेक इट्स वेरी ओवर एस्टिमेट मीन्स हमको इसको स्टिफनेस क्या देनी पड़ेगी ज्यादा तो हमारा क्या होगा कॉस्ट का क्या हो जाएगा कॉस्ट हमारी क्या कर जाएगी प्रोजेक्ट की इंक्रीज कर जाएगी सो जस्ट वी हैव टू मेक योर एंगल सेक्शन इन दिस डायरेक्शन ओके इस केस के लिए तो ऐसे लेने हैं और एक हम अगर हमारा मान लो लेंथ अलग है किसी भी वे का लाइक दिस इज योर प्लान दिस इज योर 4 मीटर दिस इज योर 3 मीटर सो हमेशा शॉर्टर स्पान में दोगे क्यों क्योंकि बकलिंग के चांसेस किस में कम है शॉर्टर में सो दिस इज द शॉर्टर में ओनली बेसिस ऑन योर बकलिंग क्राइटेरिया ओके सो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इस केस के लिए देना हो तो किसमें दोगे हमेशा शॉर्टर स्पान के अलावा क्योंकि वहां पे उसमें क्या होगा बकलिंग के चांसेस भी क्या होंगे कम होंगे सो अभी हमारे केस के अंदर तो दोनों साइड सेम है सो सेम के लिए किधर लोगे मैंने बताया था जस्ट इन दी एक्स डायरेक्शन ओके you have to select your beams so you have to put your nodes on these beams only इन beams पे हमको क्या चाहिए नोड चाहिए क्योंकि जब इन पे नोड आएगा तभी हम क्या करेंगे लिंक कर लेंगे इनको ऐसे एक्स डायरेक्शन में क्या कर लेंगे सभी को लिंक कर लेंगे ओके सो व्हाट आई एम डूइंग आई एम सेलेक्टिंग द बीम्स along the z axis select parallel to z all the beams are selected parallel to z you have to just right click insert node and put two nodes for 1 meter 1 meter 1 meter difference so if you go for the geometry then you will able to see the nodes are divided at everywhere now it's a very complicated task that कि अब तुमको हर एक नोड पे क्लिक करके क्या करना है ऐड बीम पे जाके क्लिक करके क्या करना है बनाना है सारे बीम तुमको क्या करना पड़ेगा बनाने पड़ेंगे तो हर केस के लिए तो बना नहीं सकते बहुत ज्यादा हो जाएंगे सारे नोड कितने बहुत सारे नोड इसके अंदर so there are some tools also that I have covered in my last lectures so what is there what is our this one connect beams in which direction z sorry in x direction okay क्योंकि बीम किस में जाएंगे x के अंदर so first of all you have to connect you have to select your nodes first so select so choose node cursor now select these nodes press on control to select multiple nodes select these nodes only if you want to see in isometric view then you can see okay these are selected now you have to go for geometry click on connect beams in x-axis so 320 members are created now you have to click on okay okay so if you see then you get the overall meshing is formed in your structure now you have to just assign the sections to them but before that if you see clearly the one more problem is also happened your beams are divided into how many parts 3 parts so you have to connect them also
बाय विच वे, कैसे कनेक्ट करोगे? सो मैंने इसका बता रखा है कि अगर तुम्हारे बीम को मर्ज करना है सो कैसे करते हैं। सो मर्ज करने के लिए क्या करना है, 1 by 1 इनको सेलेक्ट करो, कंट्रोल करके फिर इसको अपोजिट अपोजिट क्या करना है, हमको मर्ज करना है। सो आइसोमेट्रिक व्यू में दोबारा मिल जाएंगे, देखो सारे क्या होगा, सिलेक्ट, यू हैव टू गो फॉर द ज्योमेट्री, देयर इज वन ऑप्शन, दिस इज मर्ज सेलेक्टेड बीम, क्लिक ऑन दिस, click on merge, yes, yes, merge, yes, merge, yes, merge, yes, you have to do it for all the cases, this one. So now if you see, then your beams are now connected. I zoom it first, तुम्हारे सारे बीम क्या हो गए, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गए, देखो सारे बीम क्या हो गए, ज्वाइन। So this thing you have to do for all the members those we have divided, जिनको हमने डिवाइड करा उन सबके लिए काम करना पड़ेगा। तो हमने कहाँ तक कर लिए थे, हमने यहाँ तक हो गया, इसके आगे वाले ले लो, 1 2 3। अब ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती जो इसमें होती है वो ये है कि इफ यू सेलेक्ट लाइक, अगर पहले तुम इन तीनों को ले रहे हो, सॉरी, अगर इन तीनों को ले रहे हो और इसके बाद तुमने सोचा कि मैं इधर की बजाय इधर चल जाता हूँ, मीन्स मैंने ये तीनों ले लिए, अब मैं कर देता हूँ मर्ज बीम पे क्लिक, तो इससे क्या होगा, सारे बीम मीन्स हम क्या चाहते थे, यहाँ पे 2 बीम अलग अलग बने, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, पूरा बीम एक में हो जाएगा। अगर पूरा बीम एक में हो गया तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज हमारे किस में देता है, डिजाइन पैरामीटर के अंदर, इसमें काफी सारे जो पैरामीटर्स हैं, लाइक आई वांट टू सी यू, if you click ice and you see the factors, lot of factors are there like df, this one, ठीक है, and you can see the deflection shape like lx। तो यहाँ पे अगर तुम देखते हो ly and l, तो यहाँ पे एक चीज दिखेगी, डिफॉल्ट इज सेलेक्टेड बीम्स लेंथ। ओके, अगर ये जो डिफ्लेक्शन सेक है अगर वो इस पे लगा, सिलेंडर सेक, तो इस मेंबर पे लगने बजाय किस पे लगेगा, दोनों पे एक साथ लगेगा, और वैल्यू कितनी लेगा वो, 3 मीटर नहीं लेगा, लेगा कितनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पैरेलल टू पैरेलल सेलेक्ट करो और उनको क्या करो, ज्वाइन, क्योंकि पैरेलल टू पैरेलल कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकते आपस में। अगर पैरेलल टू पैरेलल हो गए तो उसमें क्या हो गया, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो ही नहीं सकते एक दूसरे से, क्योंकि क्या है, उनके बीच में एक सेकेंडरी बीम भी पास हो रही है। सो आई जस्ट टेक दिस वन। सो देखो एक के बाद एक ले सकते हो, क्योंकि मैंने इतना पोर्शन छोड़ दिया, अब अगले पोर्शन से ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कनेक्टिविटी के चांसेस है ही नहीं। यहाँ पे भी कोई भी चांसेस नहीं किसके, कनेक्टिविटी। सो यू कैन टेक दिस वन आल्सो। Okay, now for this one you have to just go to geometry, merge, you have to just do it again and again. Yes, done. So if you select any beam, then okay, so the new version has this problem also. Okay, so new version में प्रॉब्लम आई थी, पहले वाले में तो नहीं था। यस, वो सारे हो गए, सभी में ही हो चुका है। सो ओके, वी हैव मच मोर टूल्स फॉर अस। तो एक और तरीका भी मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो, देखो। सो यू कैन गो बाय दिस वे ऑल्सो, you join these all the beams, those are in that direction, click this one, now go for the merge beam, सभी को मर्ज कर दो एक बार। इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब मॉडलिंग के बहुत सारे टूल है, बहुत सारे तुम कैसे भी कर सकते हो, तो मैं सारे तरीके दिखा देता हूँ यहाँ पे। yes, so now if you see, then this is connected thoroughly, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, एक बीम। अब हम इसको डिवाइड तो कर सकते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन है डिवाइड करने का। we have the another tool also that how we can divide it. So you can see that there is an option break beam. Okay, so you have to first select the node. So I select the node first. So which are the nodes we have to select? So first of all, go to the top view. Now, because
इन अनदर टैब, ज्योमेट्री के अलावा अगर किसी और टैब में जाओगे तो नोड नहीं दिखेंगे, उसके लिए क्या करो, ज्योमेट्री में जाओ ताकि नोड भी दिख जाए हमको। नाउ यू सेलेक्ट द नोड्स, किस किस के बाद हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। पहला हमारा कौन सा, ये। तो जितने भी ये सारे हमारे नोड है इनको चूज करो। अच्छा नोड कर्सर गया क्या, ओके, अगेन सेलेक्ट नोड कर्सर, क्योंकि इसके बाद हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। अगेन आगे आओ, अगले सेगमेंट में ये रहा, ये भी सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट सेगमेंट दिस वन, ओके। सारे नोड क्या हो गए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। देख लो जो हमको चाहिए तो उनके बाद क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इजीली। नाउ गो टू द ज्योमेट्री एंड क्लिक ऑन ब्रेक बिन। So now again your problem is solved. 144 beams are made. So I go for geometry में ही देख लेते हैं, no problem. तो देखो this beam is now different. Okay. So there are a lot of options in our Staad. You can model it by any of the method. So किसी भी बीम पे सिलेक्ट कर लो, वो ऑटोमेटिक जो पहले था वही आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देख लो कहीं पे भी सिलेक्ट करो, your beams are divided now. Okay. So is it clear for everyone, or any have doubt? Then you can ask for this. नो सर, ठीक है। Okay. आरसीसी so में भी सेकेंडरी बीम देने से ऐसा ही करना पड़ेगा? हाँ, आरसीसी में भी दोगे तो सेम मॉडलिंग है, मॉडलिंग के तरीके हर जगह सेम रहेंगे, डिजाइन चेंज होगा बस। ओके ओके ओके। यस, तो आगे चलते हैं। Okay, now we have to assign the property for our angles. So go to the property section database and take Indian section. Take the angle sections, those are at here. Now take some IR, okay, थोड़ा ज्यादा ही लेना है क्योंकि हमने spacing 1 meter रखी है, so 1 meter spacing is already very high, so we have to take some maximum. So I take the like 200 not this one, 150 150 and 15. अभी कोई सा भी ले लो, ऐसा कोई रूल नहीं कि हम कौन सा ले, सर हमें बहुत कंफ्यूजन है, कोई सा भी लो। जब हम डिजाइन में जाएंगे तो हम ऑप्टिमाइज कर देंगे सेक्शन को, तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्टिमाइज सेक्शन ले लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा सेक्शन हुआ, कैसे सेलेक्ट करोगे, दोबारा प्रॉब्लम आएगी कि सर हम कैसे सेलेक्ट करें, हमको तो सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आने वाली है, एक ये रहा फिर एक ये रहा, बहुत सारा हॉटस्पॉट हो चुका है, तो कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे, सेलेक्ट कैसे करोगे अब तुम मेंबर्स को, बताओ मुझे, किसी के पास आंसर हो तो एक बार। So we can go कार्ड for सेक्शन करके, connect. कौन सा, कार्ड सेक्शन करके। कास्ट कास्ट सेक्शन, हाँ ऐसा कोई टूल तो आई थिंक है नहीं, कास्ट सेक्शन करके। Cut section, cut section. कट सेक्शन, ओके, यस अश्विन, यू ऑल्सो हैव सम आइडिया आई थिंक। Regarding what? Okay, so okay, everyone have their opinion, so no problem, but I prefer you go through the missing property, that's it, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एक बार में। ओके, मिसिंग प्रॉपर्टी कौन सी है जो हमारे We बचे ही can हैं, go from connect. कनेक्ट टू द बीम्स और व्हाट, Yeah, connect along X, Y, Connect. or Z. टू कनेक्ट, Hmm. but you have to enter the node number for that, or you can select also, Okay. so you have to select the nodes also, so that will be a So very sir, even big, from top view, we can select the nodes, na? या बट यू हैव टू सेलेक्ट ना, देखो कितना टाइम लगेगा, जो मैंने ये करा है मिसिंग प्रॉपर्टी, इसमें तो तुरंत हो गया, बिल्कुल कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अच्छा, okay. है ना, Okay. एक बार में हो जाएगा। तो इससे एक चीज तुमको जो सीखनी है वो ये है कि तुमको हमेशा जो प्रॉपर्टी है 1 by 1 असाइन करनी है, कभी भी एक साथ लेके मत बैठना, तो अगर एक साथ लेके बैठोगे तो इसका यूज तुम बहुत ही बिल्कुल एंड में कर पाओगे, बिल्कुल एंड में, क्योंकि लास्ट में जो बचेगा उसी पे लगा सकते हो उसको। लेकिन अगर मैं 1 by 1 करूंगा तो मेरे पास हर एक टाइम पे क्या होगा, एक मिसिंग प्रॉपर्टी होगी। Okay, so at that time you have to remember this thing, missing property too, because it will very helpful. Or you can go for the groups also, you can divide the groups like
I go for utilities. I make group by connector beams and I take the beam in x direction. Okay, मैंने beam ले ली x direction पे और primary beam. Okay, I take the primary beams B in x. Click on OK. Okay, blank भी नहीं दे सकती है, no problem, कोई दिक्कत नहीं. Primary beams in x direction. Click on OK. Now select the beam first. क्योंकि अगर one by one जाओगे तो बहुत easy होगा. One by one जाओगे like you go for above and you select the beams in x direction. So in this way you can also go. So but now it is a problem because we have to select all the things. So there are a lot of options to select. और जो पीवी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा इसका, तो वहाँ पे भी हम सीखेंगे कैसे हम इनका ग्रुप्स का यूज करते हैं और मिसिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. ओके, तो वहाँ पे क्योंकि हमको बहुत सारे पर्लेम्स के लिए अलग सेक्शन होगा, ड्राफ्ट्स के लिए अलग सेक्शन होंगे, जितने भी हमारे रिजल्ट देंगे सबके लिए अलग, मेन फ्रेम होगा उसके लिए अलग सेक्शन होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा इसका, तो मैं वहाँ पे भी सिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं. So now we have assigned it or not? I think not assigned. Yes. Missing property assigned to selected. Assign. Yes. So now your geometry and modeling part is complete. Up to the material, here all the things are completed. So this is your building here that you can see. Okay. Now we go for next procedure, that is our last for today's class. That is our specification. तो इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, क्योंकि जो हमारे ये जो बीम है मैं वीडियो से दिखाऊंगा वापस, क्योंकि वीडियो मैंने इसलिए शेयर किया था ताकि इसमें काफी कुछ है सीखने के लिए. So if you see then yes, so if you see your this angle section is simply supported, क्योंकि कैसे कनेक्ट है, hinge to hinge connection हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. So that's why you have to take in what, क्योंकि हम एंगल सेक्शन किसके लिए ले रहे हैं, it take only compression and only tension. इसके अलावा हम कुछ और इसमें देना ही नहीं चाहते एंगल सेक्शन के अंदर. Is it clear for everyone? एंगल सेक्शन में जितना हो सके मोमेंट को जितना हो सके अवॉइड करना है, जितना हो सके, इसलिए हम एंगल सेक्शन के लिए क्या करते हैं, हमेशा हिंज प्रोवाइड करते हैं दोनों एंड्स पे. So we provide the hinges at both the ends for every of the angle section. Okay, so now how we can do this? You have to again go for the software and you have to go for beam. तो बीम में जाके तुमको ऑप्शन मिलेगा रिलीज का. स्पेसिफिकेशन के अंदर बीम में जाके रिलीज के ऑप्शन मिलेंगे कि अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक स्टार्ट एक एंड. मैं किस पे जाता हूँ, मैं स्टार्ट वाले पोर्शन पे भी जाता हूँ और एंड वाले पोर्शन पे भी जाता हूँ. वहाँ पे क्या बन जाए, रिलीज बन जाए, मोमेंट रिलीज. क्या रिलीज करना है, मोमेंट. सो आई हैव टू सिलेक्ट ऑन व्हाट, it will ask for the release. So click on mx, my, mz. Add this same procedure for the end at also. End के लिए भी करना है, दोनों एंड पे चाहिए, क्या चाहिए, मोमेंट रिलीज चाहिए. Just 1 second. One Ashwin. Okay. Okay, Ashwin, now okay. Okay, so when you left this meeting, So I don't know what is the problem, sir. In the middle, I was not able to see your screen, so I had to leave the meeting and then come back again. okay, so up to where you have get all the things like In that where you were in the missing property. missing property. Okay. So if you want to assign the property, then you can use the missing property. First of all, click on your property first. Yes, Santu ask what is like. Can we use that inverse option for selecting also? Inverse option. For selecting the beams in order to assign this property, can we use this inverse option also? Which one? Selecting these this 1 and 2 references, and by selecting this inverse option here in the beams section, there exists an inverse. Okay, inverse. Yeah. Then
Firstly, we select these two reference sections like ISMB 500 and 350. Just select these two and press this inverse button so that Okay. I got it. Yes. So you have the idea, then you can also use it because there are a lot of tools in available for the select. So you can use anyone. okay. Okay. So first we complete. So Ashwin, you can use the missing property also. First of all, click this one. Now click on missing property, and because there is not any missing property because I already assigned it. Okay. So you got the messages. You can assign it very easily. तो इसके आगे अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हमारे जो जैसा वीडियो में है कि जो हमारे एंगल्स हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल 0 हिंज टू हिंज कनेक्ट है, क्योंकि हम एंगल सेक्शंस में कभी भी मोमेंट नहीं चाहते because we just design it as a compression member or tension member. Okay, so for the tension member and compression member, these both the ends should be hinged. So to provide these both as hinge, you have to make the specification for the beams. So I delete it first. I go again. Click on beam. Take the release at start end as moments, and for the end also. For the end moments you can take also. Edit. Now you have to assign this both the property to all the angle section. Now again, I want to ask how you assign this property to the angle section. You can go to the properties. Okay. So by the property name, by property, you just select this one, assign it to the selected beams, assign, yes. Now you can see just at the start end, the releases. You have to assign the end also. So again, you have to go to the property name, by property, this one, and selected, assign, yes. Now it is assigned on both of the ends of everyone. Okay. So now your modeling part is complete. We have to just assign the supports at the bottom by create, take the fixed one, click on add, select it, and select the bottom nodes. By shift and right click, take any appropriate view like side view and front view you can take. Select bottom nodes. Here you can see the option assign to selected nodes, assign yes. So now for today, it is okay. So anyone have any doubt, then you can ask me. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. Yes, sir. Can you go back to the specifications one? Okay. Specifications. Yes. Sir, in this, how we will, like, we have just assigned it, but how we will get to know which this thing we have applied, like which support we have applied. Okay. So, you know, the angle sections are very small in the sizes. Yes, sir. Are you agree? Okay. So if you agree, then you will see that when you will join the angles with your web of beams, okay, then there you can't resist the moment because those are just like a small sections. These small sections, and this is the web of your beam, and this is just flange. So this contact area can't consider for the moment resisting. That's why we have to take these sections as moment release, these nodes as moment releases for this member. And second way, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे एंगल सेक्शन में क्या मोमेंट्स हैं, क्योंकि एंगल सेक्शन का जो एरिया है बहुत छोटा होता है, बकल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. That's why we don't want there will be any moment will be considered. That's why we have to assign the releases at both the ends. सर रिलीज का मतलब उस पर मोमेंट नहीं आ रहा है ना. बिल्कुल, रिलीज मतलब मैंने सिंपली सपोर्टेड बना दिया इसको, ओनली सिंपली सपोर्टेड. तो क्या होगा, कंप्रेशन आ रहा है तो कंप्रेशन आएगा, टेंशन आ रहा है तो टेंशन आएगा. ओके. या अनदर डाउट? क्योंकि कोडल प्रोविजन तो मैंने कराई दिया लास्ट लेक्चर में सारे जितने भी पॉसिबल हैं, और अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे सारी कि हम लेटरली सपोर्टेड कहाँ लगाने वाले हैं, कैसे हम एलएक्स लेते हैं, एलवाई लेते हैं, एलजेड लेते हैं, सारी चीजें मैं इसमें कर रहा हूँ. धीरे धीरे आगे जाएंगे तो अब वही देखने वाले हैं, डिजाइन.
फिर पी स्ट्रक्चर में और सर ज्यादा अगर सीखोगे। यहाँ यस, सर अगर यहाँ पे कैंटिलीवर करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? कैंटिलीवर अगर तुमको तुम्हारा मान लो कुछ बालकनी है तो कैसे दोगे ऐसा? हाँ अगर कोई बालकनी देना चाहते हो तो कैसे दोगे, ये पूछ रहे हो? हाँ 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 हाँ। Okay. So you टेलीफोन have to just और take the sections like I make that. Yes, ये मान लो कि इसके नीचे तुम्हारा सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये मैंने एंड ऑफ द पोर्शन लिया है। ओके, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, दो बीम्स और निकाल दो और बस यहाँ पे स्लैब कास्ट कर दो। अगर ये इसके अंदर भी फेल होता है, क्योंकि फेल होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, यील्ड लाइंस फॉर्म होंगी। द यील्ड लाइंस आल्सो फॉर्म ड्यू टू द स्लैब। ओके, सो हो सकता है ये इसमें भी फेल हो जाए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक कॉलम नीचे पास कराना ही पड़ेगा इस केस के अंदर। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बहुत सारे ऑप्शन तुमको बता सकता हूँ कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी। सो वन बाय वन मैं बता देता हूँ एक बार। नए पेज पे जाते हैं। लाइक दिस इज योर कॉलम, आउटर मोस्ट कॉलम, एंड दिस इज योर बालकनीज। ओके, so you can take one road also. By the one road you can connect them, so you have to just make the moment release at the both the ends again, because you just want to make it as a prop cantilever। क्या करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ तो फिक्स्ड है इस वाले एंड पे, ये तुम्हारा फिक्स हुआ, ये तुम्हारा कैंटिलीवर हुआ। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक रिएक्शन दे दिया लाइक का रोलर सपोर्ट। सो रोलर सपोर्ट मीन्स ये हमारा क्या होगा, प्रोप कैंटिलीवर। सो क्या हुआ, मैंने इसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या करी दी, एक से इंक्रीज कर दी, +1 मैंने ऐड कर दिया। अगर इनडिटर्मिनेसी तुम्हारा इंक्रीज होता है, दैट्स कॉल्ड एज DSI। सो द नंबर ऑफ इंटरनल hinges are required to form a mechanism। मीन्स इसको कोलैप्स करने के लिए हमको जो इंटरनल हिंज की जो हमको जरूरत पड़ेगी, कितने पड़ेगी, DSI +1 पड़ती है हमको। सो एक और ऐड हो गया अगर DSI के अंदर ही, तो हमारे नंबर ऑफ इंटरनल हिंज भी क्या हो गए, +1 हो गए। +1 से क्या होगा, तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दिस इज द वन वे, by that you can increase the stability of your any cantilever ports। this is your like a cantilever port ports। okay, बहुत सारे ऑप्शन है। सेकंड क्या है कि यहाँ से एक कॉलम अगर तुम देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि दे भी सकते हो, क्योंकि अगर तुमको यहाँ पे बीम डालना पड़ेगा पीछे की तरफ, then you have to assign the column also at here। so you have to make the column also from this joint in the downward direction। दूसरा तरीका है नीचे से दे दो एक सपोर्ट, ऐसे एक एंगल इधर भी निकाल दो, ये भी सपोर्टेड है। काफी सारे तरीके हैं, ये बिल्कुल साइड पे तुम देख सकते हो इजीली। डेली लाइफ में भी काफी स्ट्रक्चर ऐसे जो देख सकते हो। यस, अनदर डाउट? नाउ क्लियर फॉर एवरीवन? स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये यहाँ में ये स्टील का स्ट्रक्चर है, इसमें नहीं, मैं आरसीसी में पूछना चाहता था एक्चुअली। ठीक है, हाँ, आरसीसी में मैं पूछ लूंगा सर। ओके, आरसीसी में पूछोगे, ठीक है। हाँ आरसीसी में वो जो हिडन हिडन बीम कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली आजकल जो बीम शो अप नहीं करना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर वाले, हाँ हाँ, तो उसके लिए जो हिडन बीम कॉन्सेप्ट है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये इसमें थोड़ा सा डाउट है। ओके ओके। सो यू कैन शेयर वन इमेज ऑल्सो दैट, एक इमेज मेरे को शेयर कर देना ग्रुप पे, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाऊँ, क्योंकि हाँ हिडन बीम्स के बहुत सारे अप्रोचेज हैं, क्योंकि मैं सारे कराऊंगा तो कम से कम 2 घंटे मेरे को उस पर चाहिए। तो मेरे को कोई सा भी एक इमेज भेज देना, मैं उसके अकॉर्डिंग करा दूंगा। ओके सर। Okay, so that we will cover in next lecture tomorrow। Okay, so thank to everyone, thanks for attending the class, have a good night। Thank you, sir. Thank you. Good थैंक यू सर। night. Thank you, गुड नाइट सर। good night।